Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goel. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। India's first ever private rocket Vikram S launched from Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi says it's a historic moment. Key domestic indices witnessed modest losses. Sensex closes below the 61,700 level. Nifty settles near 18,300 points. And Brent crude oil price declines below $90 per barrel mark. आर्थिक सुर्खियों में भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट विक्रम एस हरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। घरेलू शेयर सूचकांकों में मामूली गिरावट। सेंसेक्स 61,700 और निफ्टी 18,300 से नीचे दर्ज हुआ और ब्रेंट क्रूड के वायदा भाव $90 प्रति बैरल से नीचे दर्ज हुए। In our top story, India's first ever private Vikram suborbital rocket was launched at 11:30 today from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. The rocket reached an altitude of 89.5 kilometers with 3 payloads weighing a total of 83 kilograms. The rocket safely splashed in the waters of the Bay of Bengal at around 115 kilometers from the liftoff site from Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi has congratulated ISRO and InSpace for the country's first ever private launch of the Vikram suborbital rocket. In a tweet today, Mr. Modi said, a historic moment for the country is the rocket Vikram S developed by Skyroot Aerospace took off from Sriharikota today. He termed it an important milestone in the journey of the country's private space industry. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ओएनडीसी का मंत्रालय ने शुभारंभ कर दिया है। इसे 6 प्रमुख क्षेत्र के लघु व्यापारियों और उद्यमियों को अपने उत्पाद ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी। बेंगलुरु में आज स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप विजन इंडिया एट 2047 की कार्यशाला के अवसर पर उन्होंने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के खरीदार, विक्रेता, भुगतान प्लेटफॉर्म और माल परिवहन से जुड़ी कंपनियां इस मुक्त तंत्र का उपयोग कर सकेंगी। उपभोक्ता क्षेत्रीय भाषाओं में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकेंगे और भोजन, अनाज तथा अन्य उपभोग की वस्तुओं को मंगा सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार के डिजिटल भारत कार्यक्रम के तहत आम आदमी की दिनचर्या में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। भारत में पिछले माह लगभग 600 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन हुआ है। आज हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। इस समय विभिन्न देश बढ़ती महंगाई का सामना कर रहे हैं, जबकि ऐसे में भारत में महंगाई की दर में गिरावट जारी है। और हमारे साथ चर्चा के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पुनीत, 2 बड़ी खबरें आज की। जो अंतरिक्ष क्षेत्र स्पेस सेक्टर है, उसमें निजी क्षेत्र के प्रवेश को मंजूरी मिली। मंजूरी मिलने के साथ ही साथ उन्होंने अपना एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। पहला रॉकेट उन्होंने लॉन्च किया जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। दूसरा, भारत में छोटे और मझोले उद्यमियों के लिए एक ओएनडीसी यानी ऑनलाइन पोर्टल भी शुरुआत हुई है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं अंतरिक्ष में निजी क्षेत्र की छलांग? कितने व्यावसायिक अवसर इससे प्राप्त होंगे? कितना रेवेन्यू जनरेट होगा? कितना बड़ा बाजार इसको मानते हैं? और ये एक छोटा कदम लेकिन कितना महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है? अमित, देखिए, जब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन स्पेस में अलाउ किया था तब काफी एप्रीहेंशन थी कि भारत की जो तकनीकी काबिलियत है वो कितनी है, और सबसे बड़ी बात कि जो प्राइवेट सेक्टर को रिसोर्सेज चाहिए, जितना पैसा या निवेश चाहिए, क्या वो भारत में उपलब्ध है। लेकिन एक बात साफ है कि जो भारत की जो कंपनियां हैं, स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्होंने ये कर दिखाया है कि हालांकि जो रॉकेट लॉन्च किया है वो उतना कोई बहुत शक्तिशाली या बड़ा रॉकेट नहीं है,
पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। और स्पेस टेक्नोलॉजीज एक्चुअली ये एक भ्रांति है कि स्पेस टेक्नोलॉजी सिर्फ आउटर स्पेस के लिए यूज की जाती है। इनफैक्ट आप यदि विश्व की सब बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को देखें तो स्पेस टेक्नोलॉजी हर जो जीवन हमारे रोजमर्रा का जो जीवन है उसमें उसकी काफी अहमियत है, काफी यूटिलिटी है। तो मुझे लगता है जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्योंकि अभी तक जितना भी भारत में डेवलपमेंट हुआ है स्पेस सेक्टर में वो सारा सरकारी पैसे से या सरकारी एफर्ट से हुआ है। जब तक इसमें प्राइवेट सेक्टर का योगदान नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर की एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होगी, मुझे लगता है कि पूरा पोटेंशियल हम रियलाइज नहीं करेंगे। तो आई कांट इवन स्टेट इनफ कि कितना इम्पोर्टेंट स्टेप है और इसका रियल असर आप देखेंगे आज से 4 या 5 वर्षों में, जब हमारे पास पूरा इकोसिस्टम होगा स्पेस डेवलपमेंट का, स्पेस में इन्वेस्टमेंट्स का। अभी तक भारत में जो ये स्पेस सेक्टर था उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सिर्फ कलपुर्जे बनाकर देने या उसके कुछ एसेसरीज बनाकर देने तक ही सीमित था। इस कदम के बाद इसमें व्यापारिक या व्यावसायिक संभावनाएं कितनी बढ़ती हुई देखते हैं और कितना बड़ा बाजार बन सकता है? देखिए, भारत, मैं आपका एग्जाम्पल देता हूं दूसरे प्रकार से। आज से कुछ वर्ष पहले, 6-7 वर्ष पहले सरकार ने जो डिफेंस सेक्टर था, प्राइवेट सेक्टर को उसमें भागीदारी के लिए एनकरेज किया, इन्वेस्टमेंट्स करी। तब भी बहुत सवाल उठे थे इस बात को लेकर कि भारत के अंदर क्या वो तकनीकी कैपेबिलिटी है कि प्राइवेट सेक्टर में की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, क्या वो हम उसमें कुछ सिग्निफिकेंट अचीव कर पाएंगे। और आज देखिए, ना सिर्फ हम भारत में डिफेंस एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, गन्स बना रहे हैं, आर्टिलरी गन्स बना रहे हैं, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और काफी बड़े पैमाने पर दूसरे अच्छे बड़े देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि स्पेस में भी ऐसा ही होने वाला है कि आज जो हम प्राइवेट सेक्टर जो भारत में कंट्रीब्यूट करेगा स्पेस डेवलपमेंट में, वो तो है ही। मुझे लगता है कि भारतीय कंपनियां जो है वो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 4 या 5 वर्षों में आप देखेंगे काफी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा उसका। Puneet, the latest update on this rocket launch, apart from the technical side of it being a 5-minute airspace time that it took, and it went 90 kilometers above the surface of the Earth, in fact the sea level, and before it landed in the Bay of Bengal as a pilot flight for this particular rocket. There is a venture capital for 500 crore rupees that Skyroot Aerospace is enjoying to develop its rocket technology. And what they're doing is that they're seeking to launch a constellation of satellites into the space for the orbital flight that the satellite will take, instead of one major launch that ISRO would earlier take part in, and that would be a major risk for the government. But now they're looking at a constellation of satellites and distribute the risk. So I think that is a commercial side as far as the private initiative in rocket launching is concerned. What we are seeing now is private limited companies with venture capital contributing capital to it. When do you see the maturity of the Indian companies to the status of SpaceX that Elon Musk has pushed his company to? So 2 things. One is that, of course, the experiment today are the project size right now in India is very small, like you mentioned. But I think these companies will grow because the capital, once it is proven that we have the capability to undertake these kind of enterprises, we will see more capital come in. If you look at companies in USA that you mentioned, they have got hundreds of billions of dollars of capital flowing from private sector into these companies. Fortunately, in India, what we have seen is that companies in the drone sector, drone manufacturing, they have seen huge inflow of capital, and they're dealing with similar technology, advanced technology in terms of space and defense. So I think Indian companies will also attract large capital, but it will take time. I'm not of the belief that tomorrow itself we will see large international capital flow into Indian space sector. It will take many, many years, and even internationally, only very large companies are able to sustain these kind of efforts. The other, the technology that you mentioned, which is basically low Earth orbit satellites, basically it's a constellation of satellites which are close to Earth orbit. They're not very high, not communication satellites like advanced InSat satellites,
but they are basically more suitable for internet connectivity, and there are private companies doing it. In fact, Bharti Airtel is one of the companies which has this large satellite communication company. So I think their Indian companies may be more successful because they are relatively low cost ventures, and they are also very directly commercial ventures. They can get, they can profit from these kind of ventures. So I think this is an evolving scenario. We just made a small start today, and I think going forward we will see much greater strides by Indian companies in this sector. पुनीत, दूसरी आज की जो बड़ी खबर है कि छोटे स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो ONDC यानी ऑनलाइन पोर्टल फॉर डिजिटल कॉमर्स, इसके कितने बड़े मायने हैं? ऐसे उद्योग या ऐसे व्यापारी जिनके लिए बड़े प्लेटफॉर्म आज की तारीख में उपलब्ध नहीं थे, इस प्लेटफॉर्म के आने से कितना महत्वपूर्ण कदम मानते हैं कि उनकी पहुंच एक जगह से पूरे भारतवर्ष में हो सकेगी? देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा कदम है। अगर इसको आप एक तरह से मान के चलिए, इसको सिंपल वर्ड्स में कहूं और आप इसको सहमत होंगे कि ये इंडियन राइवल है टू वेरी लार्ज नेम्स लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, बड़े बड़े जो कंपनियां हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हैं, उनसे ये एक मुकाबला करने वाली कंपनी है भारतीय लेवल पर। और जितने जो छोटे वेंडर्स हैं, जो स्मॉल वेंडर्स हैं और जो इन बड़े प्लेटफॉर्म्स को, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस नहीं कर पाते थे, यहाँ पर अपना सामान नहीं बेच पाते थे, उनके लिए जो भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ये मैं कहूंगा ONDC जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दो कारण है। पहला कारण ये है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वो जो वेंडर्स हैं, जो सेलर्स हैं, उनसे काफी बड़ी कमीशन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनको प्रॉफिटेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। जो छोटा वेंडर है वो आराम से माल नहीं बेच पाता, उसको कहीं 25%, 30% तक उसको अपना जो रेवेन्यूज है वो शेयर करने पड़ते हैं, तो वो उनके लिए वायबल नहीं होता। तो मुझे लगता है कि ये फीस जो है ये रिलेटिवली कम होगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दूसरा जो बड़ा बात है कि जो लॉजिस्टिक्स है इसकी, वो उससे जो छोटे शहर हैं, जो दूर दराज के शहर हैं जहां पर बड़ी कंपनियां नहीं पहुंचती, मुझे लगता है कि ये वहां भी उसको सर्विस कर पाएगा। तो डेफिनेटली आने वाले समय में इफ इट वर्क्स, देखिए काफी बड़ा चैलेंज है, आसान नहीं है। किसी बड़े देश में आज तक ऐसा हुआ नहीं है। प्राइवेट कंपनीज ही हम जानते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी सक्सेसफुल हुई है अभी तक। भारत की एक बहुत बोल्ड एक एफर्ट है कि एक ऑल्टरनेट ऐसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए। आपने जैसा कहा कि बहुत बड़ी चुनौती है कि इस तरीके से सरकार ने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है उन कंपनियों के लिए या उन व्यापारियों के लिए जो बड़ी कंपनियों से जुड़ने में जिनकी जो लाभ है वो कमजोर पड़ जाता है या खत्म हो जाता है। ऐसे दौर में क्योंकि जो बड़ी कंपनियों के प्लेटफॉर्म हैं उनमें एक भरोसा जगा रहता था कि आप जो भी कुछ खरीदेंगे, अगर उसका उत्पाद आपको पसंद नहीं आता या उसकी क्वालिटी में आपको कहीं समझ नहीं आती तो आप उसको वापस कर सकते थे। उसकी एक ये कहना चाहिए कि कहीं ना कहीं एक प्रूवन उनका ट्रैक रिकॉर्ड है। यहाँ पे इस तरीके की चीजों की चुनौती से कितना बड़ा सामना होगा और ये किस तरीके से पार पा पाएंगे? देखिए अमित, ये जो बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज डेवलप हुई पिछले 20-25 वर्षों में, तो काफी अनुभव के साथ ये कंपनीज डेवलप हुई हैं और जो आपने जिक्र किया, ये इन्होंने चैलेंजेस सॉल्व किए हैं। ये मुझे नहीं मालूम कि अभी ये चैलेंजेस हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसमें कैसे टैकल किए जाएंगे, बिकॉज अभी तक ये बीटा स्टेज में था, टेस्टिंग स्टेज में था। अब इसको धीरे धीरे लॉन्च किया जा रहा है इस प्लेटफॉर्म को, और मुझे लगता है काफी चैलेंजेस होंगे। देखिए आसान नहीं होगा, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज लॉजिस्टिक्स का है। दूसरा जो कमर्शियल टर्म्स हैं वो भी काफी, कितने देर में वेंडर्स को पैसा मिलेगा, कैसे इसका पेमेंट गेटवे कैसा होगा, तो कई बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने कहा कि गवर्नमेंट लेवल पर या टू सम एक्सटेंट आप तो कह सकते हैं कि एक कमर्शियल एंगल क्योंकि कम है इसके अंदर, जो दूसरे बड़े प्लेटफॉर्म हैं उसमें ऐसा कहते हैं कि 25-30% वो कमीशन लेते हैं, इसमें कमीशन कम होगी। तो क्या ये कमर्शियली वायबल होगा, नहीं होगा, ये सवाल अभी है। मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं ना होगा ये वर्क करता है या नहीं करता, बट मुझे फिर भी लगता है कि बहुत बोल्ड एफर्ट है, बहुत बोल्ड शुरुआत है, और इफ इट वर्क्स इट विल बी रियली यूनिक इन द वर्ल्ड। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थापित कंपनियां हैं उनके लिए तो ये चुनौती बनकर उभरेगा ही, और कहीं ना कहीं क्या उन पे दबाव आएगा कि वो जो आपने बात करी कि ये जो रेवेन्यू साझा करते हैं 25 से 30% का, वो इस दर को कम करें फौरी तौर पे, जिससे कि वो अपने जो अपनी कंपनियां हैं या जो अपने विक्रेता हैं उनको न खो दें।
हाँ बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि एक सीधा फायदा तो ये जरूर होगा हमारे, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। तो जो कई बार वो फील करते हैं कि बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस हैं उनके पास ऑनलाइन सामान बेचने की, वो चॉइसेस कम हो, मतलब ज्यादा हो जाएंगी और उनको कंपटीशन बढ़ेगा, वो एक फायदा सीधा जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने जितना मेहनत की है इस प्लेटफॉर्म पर, कई महीनों से, कई वर्षों से इसके ऊपर काम किया जा रहा है और काफी डेवलप्ड नेटवर्क बनाया गया है इसके लिए, मुझे लगता है ये सक्सेसफुल होगा। पर इट मे टेक टाइम, सम एक्सपीरियंसेस में बी देयर, लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। चलिए नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज मामूली गिरावट दर्ज हुई। एशियाई बाजारों में गिरावट के संकेतों से घरेलू बाजार में नुकसान रहा। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.1% की गिरावट से 87 अंक गिरकर 61,663 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.2% की गिरावट से 36 अंक लुढ़ककर 18,308 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई। The key domestic stock indices today witnessed marginal losses. Both stock indices declined amid negative cues from other Asian share markets. Sensex closed below 61,700 points, while Nifty settled near 18,300 level. Sensex fell by 87 points, 0.14% to close at 61,663. Nifty also declined by 36 points, 0.20% to end at 18,308. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index declined by 0.44%, while the small-cap index fell by 0.45%. In the Sensex pack, 11 companies posted gains, while 19 logged losses. Hindustan Unilever was the top gainer as it added 1%, followed by Asian Paints, which rose 0.9%. HCL Tech climbed 0.8% and SBI surged 0.6%. On the other hand, Mahindra and Mahindra declined 2.5%. Maruti fell 1.6%. Bajaj Finance and IndusInd Bank both slipped 1.5% each. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 18 out of the 20 sectors logged losses. On the realty sector, gained 0.1%. The auto sector declined 1.2%. Oil and gas and energy, both indices fell 0.7% each. Consumer durables index slipped 0.6%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,360 companies gained, while 2,137 companies fell. Shares of 129 companies remained unchanged. Puneet, your take on the market today. The FIIs for a change were the net sellers, the DIIs were net buyers, but only to the tune of 890 crore rupees. The VIX is at a low of 14.39, low volumes, range-bound trade and minor correction. What is that telling you, and what does this mean for next week when the market reopens for trading? And also, do give us an insight on the FPIs who are generating fund inflow primarily from Hong Kong and Mauritius. So, the way you characterize is that this was a very narrow, low volume, narrow trading market. It is true because after 4 weeks of smart gains, in fact, last 4 weeks in the markets, we have seen the indices go by 7 to 8%. This week was a very quiet week, in fact. And I think there was some profit booking, there was some slowdown in terms of buying. Of course, foreign investors are buying on certain counters. They, in fact, were sellers in certain counters. So it was a mixed bag, but wasn't a very aggressive week. I think a week of consolidation. And next week is, of course, the week of expiry for monthly futures. So we will see a lot more volumes, a lot more activity. But I think markets are consolidating at present, because they are digesting a lot of economic news. We know that there's a distinct slowdown in economic growth. We know that inflation is coming down. So that is good news. Central banks may no longer be very aggressive in raising interest rates. So market is digesting all this news, sometimes which is pointing in different directions. So my own sense is that going forward we will see somewhat subdued and muted trading. However, if you look at the markets, some sectors like PSU banks were doing very well this week. We saw a very smart gains in PSU banking stocks. There was some profit booking in autos and FMCGs. So those counters. So it was really a market, like I would say, consolidating. And going forward, I think we will remain in this kind of a trading range, probably for a couple of weeks. And then we have a spate of central bank activity coming up in December, and probably after that the markets will take some kind of direction. So we could see a narrow, muted kind of trading range
for stock markets in India and globally also. If you see, the markets are really consolidating. पुनीत, अगर सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं, तकरीबन 1 से 0.1 या 0.2 मामूली गिरावट है, लेकिन वहीं हम मिड कैप और स्मॉल कैप को देखते हैं, वहां पे इससे ज्यादा गिरावट है. क्या मायने समझे हैं? क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में ठीक है, कुछ कंपनियों के शेयर हैं, कुछ कंपनियों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बड़ी गिरावट है, तो क्या ये माना जाए कि जो हाल की तेजी है वहां से मुनाफा वसूली आई है, या उस लेवल पे अभी शेयर बाजार का, शेयर सूचकांकों का टिकना थोड़ा सा शायद चुनौती भरा है? तो अमित देखिए, इनफैक्ट जो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं और इंडिसेस हैं, उनमें उसको हम बीटा ज्यादा कहते हैं. बीटा मतलब जब लार्ज कैप्स मूव करते हैं तो अगर वो थोड़ा बढ़ते हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा बढ़ते हैं और उसी प्रकार से गिरावट भी ज्यादा आती है. तो जो हम देख रहे हैं ट्रेंड इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप्स में, वहां पर हम ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं और जो प्रॉफिट बुकिंग उसकी वजह से वहां पर थोड़ी गिरावट आती है. अगर हम एफआईआईज की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को जब एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि वो ज्यादातर लार्ज कैप्स में ही अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआईज ने पीछे काफी बड़े पैमाने पर जो नई न्यू इकोनॉमी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा कि ब्लॉकलीज में वो शेयर्स बेचे हैं, कुछ पैसा उन्होंने विड्रॉ किया है मार्केट से. तो मुझे लगता है कि अभी जो मार्केट की जो इंटरनल एक्टिविटी है उसमें स्मॉल कैप्स और मिड कैप में थोड़ा प्रेशर है, ईयर एंड प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हैं उसको, पर ओवरऑल जो स्टेबल फंड फ्लोज है वो भी स्टेबल ही है. देखिए, जो एक बहुत बड़ा बदलाव आया है बाजार में और उसका हमने देखा, जो एफआईआई की एक्टिविटी रही, पहले कंसिस्टेंटली वो बेच रहे थे काफी लंबे अरसे तक, फिर थोड़ी बाइंग हुई है पिछले 3-4 हफ्ते, और डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई 115 से 114-15 के लेवल से डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल पर आ गया, और वहां हमने देखा कि उससे जो एफआईआई एक्टिविटी थी वो थोड़ी स्टेबलाइज हुई, थोड़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आई. तो कुल मिलाकर ये सब ट्रेंड्स हैं मार्केट के अंदर, इनका मिलना जुला असर हम देख रहे हैं. बट मैं भी चिंतित नहीं हूं. आपने कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में कोई बहुत ज्यादा गिरावट आ सकती है या कमजोरी है. मुझे लगता है छोटी मोटी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग तो हुई है, पर कोई बहुत चिंता का विषय नहीं है, कोई बहुत हेवी सेलिंग नहीं है अभी इन सेक्टर में. नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर. अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट से एशियाई बाजारों में भी नुकसान का दौर रहा. चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.6%, सिंगापुर का स्ट्रेस टाइम्स 0.4% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.3% की गिरावट से बंद हुआ. जापान के निक्केई में मामूली गिरावट रही, जबकि दक्षिण कोरिया का कोस्पी मामूली बढ़त बनाने में कामयाब रहा. उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.8% से 1.1% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए. Puneet, we saw the London FTSE in fact gain by 0.8%, even though right now the UK is technically declaring a recession in its economy. Yesterday we read about how the CPI for October is at 11.1%. What does this tell you about the economy in the UK vis-a-vis how the market is performing, the FTSE 100? So market in UK stabilized, in fact, after the latest budget kind of numbers that they put out, where they cut spending, so which is a good thing, because UK's budget was really out of balance, and markets were concerned about it. We saw what happened to the previous prime minister, and when she cut taxes, she did not cut expenses, and deficit was going up. So they had a huge problem on the government securities. So clearly, I think UK markets, while the macroeconomic news is pretty bad in UK, it's very bleak. Inflation is high, growth is coming down. It's a typical disinflationary kind of problem. But I think the markets are taking heart from the fact that interest rate cycles will slow down because economic growth is slowing down, and the government is trying to come to grips with the fiscal situation. So they've raised a bit of taxes, they're cutting expenses in the economy, and that is why you see UK markets doing better and not spinning out of control like they did earlier. Globally, of course, we are all waiting to see what the central banks do, whether they will slow down their interest rate cycle. Right. If that happens, then markets will do better. Let's have a look at the U.S. stock market now. The three major U.S. stock indices ended lower yesterday in a volatile session
Wall Street main stock indices fell as hawkish comments from the U.S. Fed Reserve official and data showing the labor market remained tight led some investors to worry about more aggressive interest rate hikes. The Dow Jones Industrial Average slipped but ended almost flat. The S&P 500 fell 0.3% and the Nasdaq Composite Index declined 0.4%. Puneet, the U.S. stock market has been very bullish despite what the Fed has announced in terms of interest rate hikes and what it's about to announce in the future. But now we're seeing the markets correcting much like India. Even though the Nasdaq has been falling quite a bit, technology shares have been suffering. We're seeing layoffs in the tech sector. So how would you look at the U.S. market, especially with the U.S. dollar index at 106? So the U.S. market so far has been quite resilient, I would say, because we saw all these stocks fall very badly. 45% fall in Nasdaq from the peak is quite brutal. We saw about 20% cut on the Dow Jones. But of course, the markets are hopeful now that the Fed will slow down in interest rate cycle. That is one. But we know anecdotally, we are talking to a lot of companies, and we know that the economy is significantly slowing down across the globe. Commodity prices are down by 25 to 30%. We will see that impact in next couple of months when we will see economic growth come down, not only in USA, it will be across the world. So clearly, I think markets are forward-looking. They are seeing that this slowdown will happen. Interest rates, the central banks have to ease their stance, and therefore the markets are quite stable. They're looking ahead. They're looking ahead to the next 6 months when inflation will be down and things will be much more stable than they are today. Let's have a look at the oil market. Oil today gave up early gains and was on track for a second weekly decline. The Brent fell pressured by concern about weakening demand in China and further interest rate rises by the U.S. Fed Reserve. In intraday trade, Brent crude was trading at $89.20 per barrel, while WTI crude prices were at $81.40 per barrel. Puneet, right now WTI crude in fact has come down even further to $80.12 while the market is still open right now. Oil prices are coming down. You mentioned about commodity prices coming down substantially and its effect will be seen in the coming quarters. What does the oil market tell you? So interestingly, the oil prices are now at levels where they were at the beginning of the year. So around 1st of January this year, this was the level of crude oil prices. So I think the impact of Ukraine war, etc., is now built into the prices, and there is no further inflation on that front. Going forward, of course, I think oil prices will soften further because the demand is slowing down. I mentioned that economic activity is coming down quite significantly, and whatever level of manipulation has been happening because of geopolitics, I think that will come down. So I'm quite hopeful that oil prices will come down further by 10 to 15% maybe over the next 2 months. Briefly, India has upped its crude purchase from Russia. Clearly, because and this is remarkable. India has been able to resist so much of international pressure in the interest of Indian consumers. They have been able to buy crude at significant discount. I think this is commendable. I mean, really remarkable that we were able to resist international pressure to put our interest first. And I think government needs to be congratulated for this. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के दिसंबर वायदा कारोबार में सोना स्टैंडर्ड 50 रुपए की बढ़त से 52,892 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 400 रुपए की बढ़त से 61,375 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना $1,777.70 प्रति औंस के पूर्व स्तर पर बना रहा, जबकि चांदी बढ़त से $21.40 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। पुनीत, बहुत संक्षेप में सोने में जो ये बढ़त है या चमक आ रही है, सिर्फ डॉलर में गिरावट से है या कोई और वजह है? नहीं, बिल्कुल सिर्फ डॉलर में जो गिरावट देखी है हमने, उसकी वजह से सोने में चमक आई है। और ये देखने वाली बात है अब कि अगले 3 से 6 महीने डॉलर कहाँ स्टेबलाइज करेगा जी, गोल्ड की कीमतों से अफेक्ट होंगी जी। पुनीत, कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। India's first ever private rocket Vikram S launched from Sriharikota. Prime Minister Narendra Modi says it is a historic moment. Key domestic stock indices witness modest losses. Sensex closes below the 61,700 level. Nifty settles near 18,300 points. And Brent crude oil prices declined below $90 per barrel mark. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra.
Market Mantra.